I am Amit. I teach quants and DILR for CAT students at MBA, a CAT training institute based in Patna. Now, we're taking up and discussing a very beautiful question here. The question which is pegged at the level of difficulty of CAT, or maybe one notch, two notches above might be. But it's a very good question. The question from which you will get some beautiful insight. Okay, so let us go through the question first, and then we'll discuss the key learning from this question later on. But let us first discuss the question itself. The question says that sum of digits of a number is 15. Okay, there's a make it sum of digits of a 4-digit number. Okay, so there is a correction here. In fact, there is an addition here. The sum of digits of a 4-digit number is 50. Okay. Now the question says that if a number is formed by reversing the order of digits of the number, it is 4626 less than the original number. So what is it saying? Let's say my 4-digit number is ABCD. हमने मान लिया मेरा assume कर लिया हमारा number क्या है ABCD. ABCD is my 4-digit number. So A, B, C and D are digits here, and D है unit place में, C is at tens place, B is at hundreds place, and A is at thousands place. So this is a 4-digit number. कहता है now you are forming a new number by reversing the order of digits of the number. So what will the number become? It will become DCBA. This is my new number, and this number is found to be 4626 less than the original number, which means that this number minus this number is equal to how much? 4626. There's only one information which is given, and the other information which is given is that sum of digits of this number is 15. So another equation that can be formed is A plus B plus C plus D is equal to 50. So we have these two equations at our disposal. By using these two equations, we have to get the values of A, B, C and D. That's the basic idea. Now you might wonder, if you are not aware of these concepts, that there are only two equations given here, two information given, and we are asked to find out 4 unknowns. As you know that if number of equations are equal to number of unknowns, we can find out all the unknowns. But if the number of equations are less than number of unknowns, then we cannot find out all the possible values of concrete fixed values of variables. There will be infinite such possibilities. So we discussed this as a concept in linear equation. So this question also belongs to linear equation, but not a straightforward one, but one where equations are less and the variables asked are more. So ideally, from our learning from linear equation, we know that whenever equations are less and unknowns are more, we get infinite number of solutions. But here, in spite of having number of equations less than number of unknowns, we still will have some finite number of solutions. Let us first go through the solution, and then we'll try and sink in the key ideas from this question. Okay, so अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका वैल्यू कितना होगा? A is at thousands place, so its value is 1000 times A. जैसे अगर क्या होता, सपोज ये होता 2 3 4 5, लेट्स से, तो ये क्या होता है 2345. सो 2000 मीन्स 2 into 1000, फिर 300 यानी 100 times B, 100 into 3, then 40 and then 5, so 40 is 10C, and then D is D only because unit place पे है, तो ये D हो जाएगा. So this is the value of ABCD, because if you write ABCD in equation form, it will become A into B into C into D, but the ABCD is not A into B into C into D, right? ABCD as a 4-digit number is 1000A plus 100B plus 10C plus D. This minus this one, this becomes 1000D plus 100C plus 10B plus A, and this is given as 4626, right? So if you subtract, you'll get 999A plus 90B minus 90C minus 999D, and this is 4626, right? So 999, you take 9 common, it will become 999, you take common, it will become
a minus d plus 90 you take common, it will become b minus c is equal to 4626. So divide by 9, you will get 111 times a minus d plus 10 times b minus c, and if you divide this by 9, 9 5 is 45, 1 2, 9 1 is 9, 3 6, 9 4 is 36. So this is my second equation. So you have two equations, and with the help of these two equations you have to find out the values of a, b, c and d. But we also know something more. Had there been no other information given, there would be infinite number of solutions. But we know something else also. See, A, B, C, D are digits of the number. So अगर A, B, C, D digits हैं, so they have a certain values. They cannot take all the possible values. They will take values from 0 to 9. जितने भी हम लोग डेसिमल सिस्टम में जो हम डिजिट्स यूज करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं? We use from 0 to 9. And A will not be 0, because if A becomes 0, it will not be a 4-digit number, it will become a 3-digit number. A, B, C, D mean A has to be a non-zero number, that is A will take value from 1 to 9, integer values, and B, C, D remaining 3 digits will take values from 0 to 9, integer values, right? So with this extra information in hand, we will have some finite number of solutions and not infinite number of solutions. So that is the basic learning here. So in spite of having less number of equations than unknowns, you may get finite number of solutions because you will have something else known about the variables. So here that something else is that they are digits, and therefore they will take values only from 1 to 9 or 0 from 9, right? So let us solve it out now. See, we'll take this a minus d as say x. Assume this as x and this is y. Then our equation reduces to 111x plus 10y is equal to 514. Now there is a specific method to solve these types of equations. We write these types of equations. We write one variable in terms of other variable. So write y in terms of x. It will become 514 minus 111x divided by 10. Okay. Now 510 को आपने तो 51 510 हो गया, और इस 111x में से 110x को निकालोगे, 110 को 10 से डिवाइड करोगे तो 11x आएगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा x माइनस डिवाइडेड बाय 10. हमने क्या किया? We have written this 514 as 510 plus 4 and this as 110 plus 1 times x. अब 510 को 10 से डिवाइड किया तो 51 हो गया, सो ये चला गया, 51 आ गया. 110 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 11x, सो माइनस 11x आ गया. और यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा x, सो 4 minus x divided by 10. So I have got an equation as y is equal to 51 minus 11x plus 4 minus x divided by 10. This is my equation. अब यहां से हम लोग इसको इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? See here, we know that a and d are two digits, so their difference will also be a digit, and the digit will not be more than 9, because एक मैक्सिमम वैल्यू किसी का 9 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किसी डिजिट का 0 हो सकता है. सो 9 माइनस 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है. और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? एक को 0 ले ले और दूसरे को 9 ले ले, तो 0 माइनस 9 माइनस 9 हो सकता है. सो आई नो that difference of two digit will have its minimum value minus 9 and maximum value plus 9, and in between all the possible integer values are possible, right? So इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे देखिए. y has to be integer because दो इंटीजर का, दो डिजिट्स का डिफरेंस y है, तो y इंटीजर ही आना चाहिए. सो y इंटीजर कब आएगा? जब ये पार्ट आपका इंटीजर हो, राइट? ये पार्ट इंटीजर हो. तो x का वैल्यू 4 ले ले, x का वैल्यू 4 ले ले, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इंटीजर हो जाएगा. तो y का वैल्यू क्या आएगा? 51 माइनस 44, 51 माइनस 11 4 जा 44, ये क्या है? 7. 7 इज एक्सेप्टेबल. दो डिजिट का डिफरेंस 7 तो हो ही सकता है. तो अगर हम लोग x की वैल्यू 4 ले लें तो y का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया. सो आई गॉट वन वैल्यू, राइट? एक वैल्यू आ गया.
जो भी अगला वैल्यू लेंगे आप, जो भी अगला वैल्यू लेंगे, हमें पता है अगला वैल्यू कैसे आएगा, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें जो ये डिफरेंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। सी, आप यहाँ पे x का वैल्यू -6 भी ले सकते हैं। x का वैल्यू अगर -6 ले, -6 ले, -6 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10/10 1 आ जाएगा। बट ये वाला 51 प्लस, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 प्लस 66 और प्लस 1। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 2 डिजिट का डिफरेंस, कभी भी इतना बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज गॉन। और कोई और ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए कि दोनों डिजिट का डिफरेंस यानी x और y की वैल्यू -9 से +9 के बीच में रहे। एक ही पॉसिबिलिटी है, x = 4 एंड y = 7। वंडरफुल। नाउ आपको आपके x और y का वैल्यू मिल गया। लेट अस नाउ jump to no let us now erase the no some part here, so that हम लोग बाकी अब इसमें नंबर्स निकालें। So I'm erasing something here. I'm जो basic part है, I'm erasing that out so that I can explain it to you. Okay. Now, all right. Now see, x का वैल्यू आया है कितना, 4। x हमने किसको लिया था, a minus d को। So a minus d is 4 and y हमने लिया था b minus c को, तो b minus c is how much, 7, right? And we have one more equation, a plus b plus c plus d is 15. So with these three we'll try to figure out the numbers here, find out the numbers here. और सी, 2 डिजिट का डिफरेंस 4 है, कैसे कैसे हो सकता है, 40 51 62 73 84 एंड 95, यही हो सकता है। सिमिलरली 2 डिजिट का डिफरेंस 7 है, क्या क्या हो सकता है, 70 81 एंड 92। बी का वैल्यू 9 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, डिजिट तो 9 से ज्यादा होता ही नहीं है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड ABCD नंबर, माय नंबर इज ABCD, सच दैट ये भी कंडीशन इनमें से भी कोई फुलफिल हो, इनमें से भी कोई एक केस हो, और चारों डिजिट का सम कितना हो जाए, 15 हो जाए, राइट? अब चेक करिए, इफ यू टेक 4 and 0 एज A and D, 4 and 0, तो 4 + 0 तो 4 हो गया, जबकि चाहिए कितना, 15। तो 15 के लिए बी और सी का सम 11 होना चाहिए, तभी तो 11 + 4 15 आएगा। 11 कहाँ पे आएगा, 9 और 2 11 है, तो कह सकते हैं बी और सी की वैल्यू 9 और 2 ले लें, तो 4920 इज वन सच नंबर, राइट? इफ आई टेक 5 and 1 एज वैल्यूज ऑफ ए एंड डी, तो 5 and 1 6 हो गया, 6 चला गया, तो हमारे पास 15 बनाने के लिए 9 और चाहिए, 9 + 6 15, राइट? तो 9 कहाँ से आएगा, 8 and 1, 8 and 1 9 होगा, तो बी और सी की वैल्यू 8 1, तो 5811 इज अनदर सच नंबर, राइट? देन इफ आई टेक 6 2, if I take 6 and 2 as values of A and D, 6 and 2 as values of A, तो 6 और 2 8 निकल गया, राइट? 8 निकल गया, तो अब मेरे पास कितना बचा है, 7 बचा है। 7 बचा है तो कौन सा होगा, 7 and 0। So I can take this as 7 and 0. So एक और नंबर मिल गया, 6702। If you take 7 and 3 as values of A and D, 7 and 3 10 हो गया, 5 चाहिए, तो यहाँ से तो 5 नहीं मिलेगा, यहाँ सम 7 है, यहाँ पे सम 9 है, यहाँ पे सम 11 है, राइट? तो हमें 5 मिल नहीं रहा है, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी हियर। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा, बिकॉज 8 + 4 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 3 चाहिए, तो 3 तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ 7 है, 9 है, 11 है। 9 + 5 14 है, तो 14 के साथ भी देखिए 1 चाहिए सिर्फ, 14 + 1 15, बिकॉज चारों डिजिट का सम 15 आना चाहिए, तो 2 ही डिजिट का सम 14 आ गया ए और डी, और 2 डिजिट का सम 1 आना चाहिए, तो 1 तो कहीं है ही नहीं, बाकी 2 डिजिट का सम या तो 7 है या 9 है या 11 है, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, ठीक है? तो 4 0 के साथ 9 2 गया, 5 1 के साथ 6 8 1 गया, और 6 2 के साथ 7 0 गया। तो ये आपके 3 नंबर्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तीनों डिजिट का सम 7 है, सॉरी 15 है, चारों डिजिट का सम, एंड इसको रिवर्स करेंगे और डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, 4626। आप एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ही लेता हूं, बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना। 4920, इसको रिवर्स करिए, 0294, राइट? डिफरेंस लेंगे 26, 47 माइनस 48 - 2 कितना आ गया, 46, कितना आ गया डिफरेंस, 4626।
और सम ऑफ डिजिट देखिए 4 + 9 13, 13 + 2 15 + 0 15. सो पहला कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है. सो लाइक दैट you have these three as your answers. So I can say the answer is that three such numbers are possible, right? So this is my answer. Three such numbers are possible. So the answer is three, right? Beautiful question, a question where you have learned the idea of how to determine variables if even if you have less number of equations and more number of unknowns, right? So I hope you have gained something substantial from this question. I hope you like this video series question of the day. Thank you guys. Thank you for watching.